Hello, good evening, friends. So welcome to Energy Test Prep, Energy Test Prep. In today's session, we will be discussing about an important topic, which is related to the CAT and IPMAT. Though it is coming in other exams, competitive exams. Also, one can say that this topic is nowadays is relevant even in most of the competitive examinations, whether it's GMAT, the difficulty level may vary, but चाहे आप डीमेट दे रहे हो, चाहे आप कैट दे रहे हो, चाहे आप आईपीमैट दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी में भी सी सेट आता है, तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बैंकिंग पीओ की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आता है, बाकी एग्जाम्स में भी आता है, एसबीआई पीओ में भी आता है, और जो इतने मतलब most of the exams which are competitive and MCQ type in nature and which has verbal ability as a section, then somewhere it is written verbal ability and reading comprehension, somewhere it's only verbal ability. So I think on the basis of that, the topic is very important, and that's why for first VARC lecture series, we are discussing this important topic. Our idea is from today onwards, we will be discussing some important topics related to the CAT examination on here itself. And one can join us and can enjoy the benefits of this interactive discussion. So I hope that you people will like this initiative and will help us or will motivate us in continuing this series. So starting with today's series, we will today discuss first about the reading comprehension. Then in reading comprehension, what is RCA is all about, what's its significance or importance of RC. We will here discuss about mostly the context of CAT examinations. But as I told you in my introductory speech that the reading comprehension or the RC is important for all the examinations. So the students of other exams, and if your friends are preparing for other examination, like maybe your friends are preparing for the IAS, which is UPSC Civil Services examination, you can also share this video with them. If they are preparing for banking examination, or you can share with them, right? Also GMAT, GRE, anyone can listen to this. It's an interactive session, and today we will be discussing about the reading comprehension. Not only we will solve classes here, but I will also give you the idea behind the RC, right? What RC is all about, what is its significance, types of questions which are being asked in various examination approach, and then we will solve the practice questions. So let's begin. What is RC? So RC is basically, in simplest term, in most of the examination, either one passage or 2 to 3 passages are given. In CATs, mostly nowadays 2 to 3 passages are coming. Same with your banking examinations also. But in the examination like the civil services aptitude test, the most of the time either one passage or 2 passages. There are 2 passages of very short in nature are coming. So in the CAT, the 2 to 3 passages are given, and the question 2 to the passages are given. One has to read that passage. Passage is in English, and one has to read that. And there are 4 to 5 questions are being given on the basis of that passage, and you have to solve that passage. You have to solve those questions on the basis of that passage. It is simplest definition or simplest understanding of RC, but RC doesn't means we shall not stop here. We have to see here what is the idea behind RC, and that's very much important. When you will understand the idea behind RC, you will get to know about the RC, that
RC in a better way, and then you can means comprehend or you can understand the importance in a in a very broad manner. So this simplest definition is there. With the other way of defining RC is that we can say the RC is nothing but the argument presented by the author, right? So see, क्या हो रहा है कि एक ऑथर है, मान लिया एक एक्स ऑथर है, मान लिया मैं लिख रहा हूँ कुछ, मान लिया आप लिख रहे हैं कुछ, और आपने कुछ लिखा, तो लिखने में आप क्या कर रहे हैं? जब आप कोई चीज लिख रहे हैं, जब when you are writing something, then it means you are actually presenting your arguments. You will be presenting your arguments on various topics. Nowadays, maybe global warming is in the news. You may be presenting your arguments on the global warming, and that's why we see in the most of the examinations nowadays, environmental related passages are being asked, mostly related to global warming. So one can say that RC is nothing but the passages are nothing but the argument of author about some important issue. The issuing the global warming, issuing the science, means benefits of science or disadvantages of science. Maybe it may be on AI, it may be on your quantum computing. So whatever the topics are there in the news, in the current scenarios, right? They are has to be in news in the current scenarios. Nowhere you will see any RC passage on optics. Why it is so? Whether people haven't presented their arguments on optics, they have presented. But most of the examination, you will see the arguments on AI, arguments on data, arguments on quantum computing, arguments on digital currency, cryptocurrency, these topics, arguments on GDP, arguments on global warming. These things will, because these are the news and these are related to our existence or our surrounding in present context. So that's why RC is nothing but argument being presented. That arguments has been written in a broad, maybe broad essay, and from there some portion has been taken up and has been given as a passage, or it may be a full-fledged argument also. कि ऑथर ने लिख दिया है उस टॉपिक पे 3 से 4 पैराग्राफ का एक आर्गुमेंट दिया है, आप ये समझ के लिए कि ऑथर एक आर्गुमेंट दे रहा है, और आर्गुमेंट दे रहा है कि ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है, या फिर ये चीज न्यूट्रल है, या फिर ऑथर दोनों साइड दिखा रहा है कि ये है। ऑथर ये भी हो सकता है, जैसे मान लिया हम जीडीपी की बात कर लें, तो जीडीपी में ये है कि वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन. So author may be in first passage may be giving you a glimpse of the GDP in India, that we are fastest growing, being the fastest growing nation among the major economies. Our economy is being growing at more than 6%, right? And we are not. There are lesser chances or zero chances of recession in India, whereas the Germany and other countries are seeing recession, something like that. We may be seeing the arguments about the India's comprehensive or strengthening GDP. But on the second contrary, the author may be presenting the contrary argument that though our size of GDP is increasing, but we still have a poverty. Our rank in global hunger index or other human development index and other important index, world index, we are not performing well, though our ranking may be improving, and in some of them it's decreasing also. So something like that. So you may see in the first passage the argument is being given. So the argument is being given about the GDP, but still on the second hand it is being contrary. The author is saying what challenges we are seeing. We will see in that passage. We are here with one passage, and we will see in that in the practice questions. So I think now you got to know about the what, because it is very much important, and it's not important
टू नो अबाउट कि 2 से 3 पैसेज आते हैं, वो तो आपको सभी जगह बताया जा रहा है 2 से 3 पैसेज आ रहे हैं और उसको सॉल्व कर लेना है. And that's the problem. People nowadays even facing the problem in solving the questions on reading comprehension, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है reading comprehension होता क्या. 2 से 3 पैसेज आ रहे हैं, सबने बता दिया बस, और that's all. That's not the thing. फिर इससे आपको अब ये डेफिनेशन से आपको ये पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है. जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि किस प्रकार के टॉपिक्स आ रहे हैं और किस प्रकार से हमको कॉम्प्रिहेंड करना है. इसका मतलब जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अपने एडिटोरियल्स और अदर रीडिंग मटेरियल्स हो रहे हैं, उसमें आपको एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स पे बहुत ध्यान देना है. आपको इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक, इकोनॉमी में भी रिलेटेड टॉपिक्स जो आ रहे हैं, जो कि आर्गुमेंट जिस पे प्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे, जॉब लॉस, पॉवर्टी, हंगर, इन पे आपको एम्फेसिस देना है. इनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल, अच्छा मटेरियल पढ़ा हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो आपको रेगुलरली पढ़ते रहना है. वही आपकी वोकैबुलरी और वही आपकी रीडिंग स्पीड, वही आपकी एफिशिएंसी, वही आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग पावर बढ़ाएगा. तो ये आपको करना है, क्योंकि आपको अभी ये समझ में आ गया कि वो बेसिकली किसी के आर्ग्यूमेंट्स हैं. वो आर्ग्यूमेंट इन पार्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वो आर्ग्यूमेंट फुल भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट जो पार्ट में भी प्रेजेंट किया जाता है वो पार्ट इटसेल्फ इज मेकिंग अ सेंस. ऐसा नहीं होगा आरसी में कि पार्ट डजंट मेक एनी सेंस, अब वो पार्ट पैसेज उठा के दे दिया जाएगा. नो, इट इज नॉट. तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आरसी, तो आई होप दैट कि आपको अब समझ में आया कि एक सिंपलेस्ट टर्म है तो ये है कि मतलब सॉल्व, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखें तो हमको भैया 2 से 3 पैसेज दिए होंगे एंड उसमें से हमको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और वो क्वेश्चंस डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी आस्क किए जा सकते हैं, बट रिलेटेड टू पैसेज ही होंगे और हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. बट on a broader picture, it's basically an argument, and on the basis of that, the author itself, author here is examiner. So examiner is asking whether you have understood my arguments or not. That's what he is checking. और उसने आर्ग्यूमेंट भी अपना दे दिया कि ये आर्ग्यूमेंट है, उसमें से एक सही आर्ग्यूमेंट है, आप वो समझ पा रहे हो, मतलब you are able to understand the author's argument. That's what RC is all about. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ ब्रॉडर पिक्चर भी हमने देख लिया, और इससे ही आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी पैसेज, इंटरनेट इज फुल ऑफ नाउ इन द इंफॉर्मेशन, तो हमको हर इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी है, हमको हमारे मतलब की इंफॉर्मेशन, तो नाउ यू मे बी गेटिंग. नाउ द सेकंड थिंग इज कि सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ आरसी. बेसिकली हियर इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ CLAT, common aptitude test. So what in the common aptitude test, if you have seen our previous videos, then there I have discussed that 67% of the questions in last year examination was from the reading comprehension. So you can see VARC section में 67% questions जो थे वो सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट से थे. तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा है, इसका मतलब आपका VARC पूरा सेक्शन ही अच्छा है. उसके बिना आप अच्छी रैंक, अच्छा परसेंटाइल ही नहीं ला सकते थे. दैट्स व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ आरसी इज. तो जब हम इम्पोर्टेंस समझते हैं, इसका मतलब हम जब अगर वल्नरेबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन CLAT के लिए पढ़ रहे हैं, देन वी विल हैव टू एम्फसाइज मच, वी हैव टू एम्फसाइज एंड गिव अ हाई प्रायोरिटी, आई नॉट इवन से highest priority to the reading comprehension. Few days where one of the student was saying that he was giving some examination and he has given importance to CLAT, he has given importance to quant, and because of that he was not able to give importance to the VARC section, and he could not solve the RC in the speedy manner, and that's why he could not get a good percentile. And it's really so, because people don't understand the importance of RC. उनको लगता है कि क्वांट तो हमसे नहीं बन रहा है. क्वांट में कई टॉपिक्स मिलके जितना वेटेज नहीं है, उससे ज्यादा वेटेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अकेले है यहाँ पर. और यही नहीं है, लगभग अगर आप सीसेट का भी एग्जाम में देखेंगे
यूपीएससी के सीसेट एग्जाम में भी देखेंगे तो लगभग 40 से 50% वहाँ भी 50% के करीब क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन। और इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें तो 100% वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि ग्रामर वगैरह और कुछ आती ही नहीं सीसेट में। तो बट यहाँ हम कैट में भी फोकस करेंगे, तो इसलिए कैट में अगर आप दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंस इज वेरी हाई बिकॉज इट्स अ परसेंटाइल बेस्ड एग्जामिनेशन। यू कैन नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम एनी ऑफ द गुड college without solving reading comprehension passages. So that's the importance. The one sentence importance is like this. Then we will discuss about the types of questions which are being asked. Now these type of questions are being asked in the examination. We will discuss one by one. Four type. I have categorized the questions which are being coming nowadays in various examinations, especially in CAT, in four categories. 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं आपके, पर्टिकुलर एक्स वेबसाइट पे तो ऐसा दिया है, पर्टिकुलर टीचर ने ये कहा है, बाई टीचर ने, दैट इज ओके, बट आई हैव कैटेगराइज्ड ऑल दीज इनटू 4 कैटेगरीज। कि बेसिक 4 कैटेगरीज कौन कौन से हैं इसमें? ये जो सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन और पर्टिकुलरली एंड फैक्ट बेस्ड एंड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दीज आर इम्प्लिसिटली दीज आर गिवन इन दी पैसेज, मतलब पैसेज से ही पूछा जाता है। वोकैबुलरी में क्या है कि कोई क्वेश्चन कोई वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे एग्रेगियस वर्ड दे दिया जाएगा एंड दे विल आस्क द मीनिंग ऑफ दिस, अपोजिट ऑफ दिस, सिनोनिम ऑफ दिस, क्लोजेस्ट मीनिंग, ऐसे सफिक्स यूज कर देंगे कि वेस्ट मीनिंग, क्लोजेस्ट मीनिंग। तो इसका मतलब कुछ मीन्स ऐसे हैं कि हाँ नॉर्मल पार्लेंस में हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो मीन दिस, बट आई 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड two you are able to eliminate, but 2 are there which can where one can be a meaning and one is definitely a meaning. So can be वाला बेस्ट में हट जाएगा और one जो डेफिनेटली अ मीनिंग है वही आएगा फिर सिनोनिम में, वोकैबुलरी बेस्ड में। सो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आई लाइक दिस। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वन फ्रेज इज बीइंग आस्क्ड एंड उसके बारे में पूछ लिया जाएगा व्हाट डज दिस फ्रेज मीन और विच फ्रेज इज रिलेटेड टू विच टॉपिक और समथिंग लाइक दैट। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में इम्प्लिसिट आंसर दिया हुआ है, वहाँ डायरेक्ट आंसर दिया हुआ, यू कैन रिकॉल योर 10th ग्रेड कि जैसे हम सीबीएसई 10th ग्रेड में पहले करते थे कि वहां डायरेक्टली क्वेश्चन पैराग्राफ से ही पूछा जाता था, वी अंडरलाइंड इट एंड देन कमिंग, बट नाउअडेज the examinations have and the examiner has improved its quality and its difficulty level. तो सिर्फ अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप नहीं सॉल्व कर सकते सिर्फ कि हाँ आप गए वहां ये लाइन पैसेज वहां लिखा है एंड इससे उससे बस आंसर आ जाएगा। नो, नाउ देयर आर सर्टेन अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। फिर सेकेंड जो क्वेश्चन जो है कि हमने कहा कि जो उसी में दिया हुआ दैट इज सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन। सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस आर जस्ट समरी। ये जो क्वेश्चंस है कि जस्ट पूछ लेगा, समरी पूछ लेगा, मतलब मेन थीम क्या है, थीम क्या है आर्ग्यूमेंट, जैसे हम जो यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, इसका एम क्या है, इसका थीम क्या है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व द आरसी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि थीम ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन इज सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन वेरियस एग्जामिनेशन स्पेशली इन कैट, दिस इज थीम। इसी को वो 4 ऑप्शंस में आपको बना के दे देगा एंड पूछेगा बेस्ट सुटेबल समरी कौन सी है, बेस्ट समरी कौन सी है, बेस्ट जेस्ट कौन सा है, बेस्ट कंक्लूजन कौन सा है। तो दीज आर सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस। Then there comes the inference based question. What are inference based questions? The inference based questions ऐसे हैं कि implicitly they may not be, there is not any implicit meaning is given. Implicitly वो नहीं मार्क किया गया है वो sentence, but it is related to passage. तो वो प्रकार के क्वेश्चंस इन्फ्रेंस में आता है कि किससे इन्फ्रेंस है। इफ ऑथर इज talking about global warming, the author is not presenting all the arguments about the global warming, पर कुछ points में between the lines आपको read करना पड़ेगा and then they will ask something related to global warming and say which is most logical inference can be made. So
On that basis, the inference based questions are those which where no explicitly it's not written, but you have to read between the lines. Subsequent topics में जब हम reading comprehension passages different type के discuss करेंगे, then we will see how to solve the inference based questions. We will see that. Then last one is the assumption based question. Assumption, like these are some ideas, some implicit ideas which author is taking when he or she is writing the passage. और अगर इसको आपको author जो है उसके आर्ग्यूमेंट से आप जोड़ दीजिए, जो भी आर्ग्यूमेंट बोल रहा है वो लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएगा. मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑथर की बायस है, वो ऑथर एज्यूमिंग समथिंग रिलेटेड इन दैट, कि ग्लोबल वार्मिंग में अगर है तो वो ऑथर हो सकता है एज्यूमशन कर रहा हो कि ग्लोबल वार्मिंग उसने ना लिखा हो, लेकिन ये एज्यूम करके चल रहा है कि यू नो ग्लोबल वार्मिंग. तो ये भी एक प्रकार की एजम्पशन है. इट्स द सिंपलेस्ट टर्म में हम ये कह रहे हैं, जैसे मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि वी ऑल नो समथिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में नहीं प्रॉब्लम सॉल्व जानते हैं. वी आर हियर डिस्कसिंग the how to solve reading comprehension in examination, because in examination two things are being tested in addition to your reading comprehension. One is your speed, another one is your efficiency. आप कितने एफिशिएंट है. आजकल हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो इट मींस देयर इज आल्सो वन एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं ना. तो आप कितने एफिशिएंट हैं वो भी चेक किया जा रहा है. एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज बेसिकली चेकिंग योर analytical skills, your understanding skill, your logical skills. कितने logical thinking, आपकी thinking ability को check कर रहा है. It's not only about your comprehension में वो यही सब आ रहा है कि your analytical skills are being checked, your vocabulary is being checked, your logical reasoning is being checked. क्योंकि reasoning अगर आपकी good होगी तभी आप inference और assumption based question कर पाओगे. और आपकी ग्रामर या वोकैबुलरी डायरेक्टली जो क्वेश्चंस देके वो वोकैबुलरी चेक कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन देके. तो नाउ यू गॉट द पॉइंट दैट व्हाट आरसी इज ऑल अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, एंड देन the what RC is actually what kind of skills it is checking, right? Which skills the examiner wants to test. So examiner want to test the skills like logical reasoning, your analytical skills, your understanding skill, and then English grammar. तो सिर्फ English का टेस्ट नहीं, English आपकी हो सकता है बहुत अच्छी हो. You may be able to write the exact translation of that passage in your mother tongue, but that doesn't mean that you are good at comprehension. Because if you cannot solve the inference and assumption based questions, then it means something is missing in your logical analytical skills. Analysis अच्छा नहीं है, उस पे काम करना पड़ेगा. And that's why people are nowadays not able to solve even reading comprehension passages, which they have done even in their 10th standard. So that's the one thing that's why I am emphasizing again and again. Now we will move towards the approach. What is approach to solve the reading comprehension passage? Here we will discuss two approaches in a broader term. One approach is related to particular passage is given in an examination and how to approach that. तो उससे related उसमें दो हैं techniques, वो discuss करेंगे. और दूसरी approach related to building your skills to solve reading comprehension while you are practicing in very efficient and accurate manner. More efficient and accurate manner. तो वो कैसे कर सकते हैं, मतलब आपकी स्किल को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं while you are practicing for the CLAT examination. अभी लगभग 6 महीने के करीब हैं, 6 महीने नहीं 4 to 5 months हैं. तो next 4 to 5 months में आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज को कैसे इंप्रूव करें. एक अप्रोच वो है. एक अप्रोच है कि पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है, पर्टिकुलर पैसेज दिया गया है,
उसको कैसे सॉल्व करें। तो वो हम जो पर्टिकुलर अप्रोच है वो जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी लगाएंगे और उस समय करेंगे। जो सेकेंड चीज है कि अप्रोच रिलेटेड टू बिल्डिंग दी प्रिलिमिनरी स्किल। प्रिलिमिनरी स्टेज में मतलब कि स्किल कैसे, सम पीपल से कि हमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व ही नहीं हो पाता, हम कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाएं, हम कैसे अपनी उसको बढ़ाएं, तो दैट वी विल डिस्कस। सो वी in that case if you are not able to solve it with speed or something like that, so what you have to do, see, first thing is that one has to practice more। अब प्रैक्टिस करने से पहले भी क्या है कि अभी हम कहेंगे कि प्रैक्टिस करने से पहले भी एक चीज आती है कि रीड मोर। पीपल आर नाउअडेज नॉट रीडिंग मोर, सब यूट्यूब और उस पर रील्स देख रहे हैं। रील्स देखने से नहीं, आपको योर हैंड शैल ऑल्सो वर्क। So when you are actually preparing for CAT, start solving the questions, start reading the editorials. That's what I also discussed in my last lecture on here YouTube itself, right? So I have discussed that, you can watch that। तो आप फिर रीड करने लगेंगे आपको, और अगर आपको शुरू में नहीं समझ में आ रहा है तो आपको, मैंने कल भी बताया कि आप उसका क्या करना चाहिए, समरी लिखना चालू कर दें। अगर 300 का है, 300 वर्ड्स का वो पैसेज है, आजकल कुछ नहीं कर सकते, ऑनलाइन में आप ले लो, आपको कि वर्ड में गिनना नहीं है आपको वर्ड, यू हैव टू ओनली व्हाट यू हैव टू डू, उसी को कॉपी करो और उसको वर्ड में पेस्ट कर दो, वर्ड पता चल जाएंगे कितने वर्ड्स का है। वो 300 वर्ड का है, उसको 1/3 कर दो, आपको 100 वर्ड में उसकी समरी लिखनी है, एंड दैट टू इन इंग्लिश। इफ यू आर एबल टू राइट दैट, एंड एक टाइमर लगा लो आप कि इतने टाइम, मान लो राइट नाउ इट्स 5:31, तो 5:31 2 मिनट्स 3 मिनट्स में हम कर रहे हैं, एंड देन अगेन जब आप रोज लिखेंगे तो आप देखना कि एक पहले सप्ताह 2 मिनट में लिख पा रहे हैं, फिर 1.5 मिनट में लिख पा रहे हैं, फिर 1 ही मिनट में लिख पा रहे हैं। और जब आप 1 मिनट से भी कम में लिखने लगे, 1 से 2 मिनट के बीच में लिखने लगे, उतने मतलब 100 शब्द नहीं, मतलब और कम में भी आप कर सकते हैं। आप 10 लाइन में लिख सकते हैं, 10 लाइन मतलब 50, अगर आप 5 का ले रहे हैं, 8 का ले रहे हैं, तो वो 5 लाइन में लिख सकते हैं। और आप जब वो करने लगे तो मतलब आपका सही फ्लो जा रहा है, एंड देन स्टार्ट पिकिंग द कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक, फ्रॉम योर लास्ट ईयर पेपर्स, और उसको सॉल्व करते रहें, रोज सॉल्व करें। इनिशियल स्टेज में 5 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, लेटर स्टेज में 10, 15, 20 ऐसे करते जाएं। और कैट के लिए तो जरूरी आपको करना है, बिकॉज आई टोल्ड यू 70% VARC का सिलेबस ही वही है, तो 70% सिलेबस के हिसाब से आपको 70% इसको इम्पोर्टेंस भी देना पड़ेगा। और फिर आप, अगर ये आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो जो बाकी एग्जाम्स में आए, GMAT में आए, वो सॉल्व करना चालू कर दीजिए आप। स्लोली in 1 to 2 months your skill will build up, or then you can solve any passage with more than 95% accuracy। तो वो हो गया रीडिंग प्रैक्टिस स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल को बिल्ड अप करना over a period of time, but this will come over it। So the crux is practice, practice, practice. That's the crux only. Practice, you have to do practice, you have to sweat in the actual thing। पसीना थोड़ा बहाना पड़ेगा आपको, और जब आप पसीना बहाएंगे तभी होगा। पसीना बहाने का मतलब आपको हार्ड वर्क करना है। दूसरे के, आप AC रूम में बैठ के और दूसरा पसीना बहा रहा है, देन यू कैन नॉट डू दैट। कि वीडियो देख के सिर्फ पैसेज सॉल्व कर दें तो नहीं, एंड slowly you also start solving the reading comprehension passage on the screen, because जब हम पेपर में कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा स्पीड वेरी करता है जब हम कंप्यूटर और उसमें करते हैं। और कंप्यूटर्स में यू मे बी नोइंग ऑल्सो दैट कि हमारी कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स, हमारी जो कहना चाहिए मेमोराइजिंग पावर है, वो थोड़ी सी कम भी हो जाती है, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए आपको वो भी ध्यान रखना है, बिकॉज पेपर विल बी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो उससे भी फिर फैमिलियरिटी बढ़ाते जाना। तो दिस इज हाउ यू विल बिल्ड अप योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्किल और एबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर approach towards solving the
पर्टिकुलर पैसेज, मतलब पैसेज जब मॉक टेस्ट में आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस बुक में कर रहे हैं, और या फिर आप एग्जाम दे रहे हैं तो कैसे करें। तो इसमें दो टाइप की अप्रोच है। वन फ्यू पीपल से कि आप पहले पैसेज पढ़ लें और फिर आप ऑप्शंस देख के फिर उनको जो राइट ऑप्शन है वो ले लें। द सेकेंड is which I do like more is that go to the option, read the option, what options are saying, और फिर आप पैसेज को पढ़ें और ऑप्शन से ही कीवर्ड को ले लें, और वहां कीवर्ड के अराउंड जो पैसेज में जो कीवर्ड्स के अराउंड जो बातें लिखी हैं, दैट यू हैव टू नो, यू हैव टू मेमोराइज। मतलब जब तक आप ऑप्शन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तब तक आपको वो याद रखनी है कि हाँ पैसेज में ये बात कही गई। तो दैट इज सेकेंड स्टेज। वी विल डिस्कस हियर द सेकेंड that technique, that is we first will see the options. So options here given on your screen are: by giving citizens greater control over shaping political and democratic agendas, political petitions are invaluable as they represent an ideal form of a representative democracy. अब यहाँ आप देखें कि फर्स्ट ऑप्शन itself when you read, you get to know about something about कि जो पैसेज है वो सिटीजन कंट्रोल के बारे में होगा, डेमोक्रेसी के बारे में होगा। मतलब पैसेज इज पॉलिटिकल इन नेचर, पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है, पॉलिटी से रिलेटेड है। इमीडिएटली वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, और सिटीजन कंट्रोल से रिलेटेड है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके बात कर रहा होगा सिटीजन कंट्रोल के, या नेगेटिव इम्पैक्ट का बात कर रहा होगा। न्यूट्रल के चांसेस कम है। That you have to also understand कि पैसेज की टोन क्या है। That will help you in solving the options, and we will practice this slowly when we will be progressing towards more classes. The second technique is petitioning has been important to democratic functioning. Again, democracy, petitioning, citizen control or democracy, as it supplements the electoral process by enabling ongoing engagement with the government. Again, in third, petitioning is definitely more representative of the collective voice. What is herein, and democratic government could improve if we relied more on petitioning rather than holding periodic elections. Here, one more keyword we have observed, that something is elections to if passage is talking something about elections, we have to keep that in mind. If not, then this option is wrong. If passage is not talking about, because वहां क्या था कि essence of passage लिखना है, तो essence में मतलब implicit दिया होगा, और implicit दिया होगा अगर essence में, अगर passage में election के बारे में talk ही नहीं कर रहा है, अगर बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये आपको समझना होगा कि अगर इलेक्शन के बारे में कह रहा है तब तो ये ऑप्शन सही है, गलत है, फिर देखना होगा। लेकिन अगर पूरे पैसेज में आपको कहीं इलेक्शन के बारे में कुछ इलेक्टोरल पैसेज इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, देन दैट ऑप्शन इज रॉन्ग। इट मींस बिकॉज पैसेज समरी पूछ रहा है ना, एंड इफ इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस, देन द पैसेज समरी कांट बी द ऑप्शन कांट बी रिलेटेड टू इलेक्टोरल प्रोसेस। तो वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। सिटीजन बिकम्स लैंड। फोर्थ है, सिटीजन्स बिकम्स लेस इंक्लाइंड टू पेटिशनिंग एज इट इनेबल्स वोकल सिटीजन्स टू सेट political agenda, but this needs to change to strengthen democracies today. See this option. इस ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो इसमें लिख रहा है कि सिटीजन को पेटिशनिंग पावर रिड्यूस करनी चाहिए, मतलब रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि हमको ये करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि लोग इंक्लाइंड टुवर्ड्स कम है। अब यहाँ पे आता है आपकी रीडिंग हैबिट्स का कमाल, जो मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप रीड करिए, उसका कमाल यही आता है। आप बिना पैसेज पढ़े ये बता सकते हैं कि जो लिटरेचर अभी भी अवेलेबल है, आप कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर, कोई भी अच्छी मैगजीन, कोई भी अच्छा आर्टिकल लेके देख लीजिए, उसमें ये तो डेमोक्रेसी और सिटीजन्स वॉइस आर सप्लीमेंटिंग ईच अदर, दे आर नॉट कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। So if they are not contrary, there is a possibility that this option is itself wrong. आपको ऑथर भ्रमित कर रहा है। There is a trap, it means, but you have to check it, because maybe author हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई बात कर रहा हो, पर ये याद रखना कि ये ऑप्शन itself without passage may be go wrong. अभी तो बाकी के बारे में तो आप बता ही नहीं सकते, लेकिन इसके बारे में कि हाँ there is a probability, false possibility और false possibility है इसकी।
आप प्रीवियस जो आपने नॉलेज एक्वायर की उसी से बता सकते हैं. नाउ लेट्स वी विल मूव टुवर्ड्स द पैसेज and then we will conclude. So passage says the petitioning, वहाँ भी petitioning के बारे में था, is an expeditious democratic tradition used frequently in prior centuries. अब prior centuries से यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि options में prior centuries की बात नहीं की. By the way, this passage is from last year's CLAT examination. तो actual exam का passage है prior centuries by which citizens can bring issues directly to the government. वहाँ citizen control, citizen issues की बारे में बात की है तो आप हाँ ठीक है. As expression of collective voice. That's why I have highlighted these things. As the expression of collective voice. तो expression किसका है? Collective voice. Collective voice की passage option 2-3 के अराउंड हमने बात की थी, मतलब options में दिया. They support procedural. तो collective voice किसको support कर रही है? Procedural democracy को. इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो हम मान रहे थे कि गलत है वो यही गलत हो गया क्योंकि कलेक्टिव वॉइस तो किसको सपोर्ट कर रही है? डेमोक्रेसी को. सो इट कैन नॉट बी it cannot be contrary to that. वो ऑप्शन ही इसका मतलब एलिमिनेट हो गया. By shaping the agendas, they can also recruit citizens to causes, give voice to the voteless, and apply the discipline of rhetorical argument that clarifies a point of view. यहाँ पे इसका मतलब जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 लाइन्स हैं, 5 लाइन किसके बारे में टॉक कर रही है? पेटिशनिंग प्रोसेस के बारे में. अब हम आएंगे दूसरे, जो यहाँ देखना चाहिए आपको कि कैसे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है. आर्ग्यूमेंट के फर्स्ट स्टेज में ऑथर क्या प्रेजेंट कर रहा है? पेटिशनिंग के बारे में प्रेजेंट कर रहा है और उसका पॉजिटिव दिखा रहा है कि उसका पॉजिटिव नेचर कैसा है. एक आर्ग्यूमेंट पेटिशनिंग प्रोसेस के बारे में प्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने बोला ना कि आरसी इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट्स. सेकेंड क्या है? अब सेकेंड में वो आता है कि बट बाय कंट्रास्ट, इट मीन्स उसके कंट्रास्ट में, किसके कंट्रास्ट में? कलेक्टिव वॉइस या पेटिशनिंग के कंट्रास्ट में इलेक्शंस आर लिमिटेड इन सेवरल रिस्पेक्ट्स. अब द ऑथर इज नाउ इन first 5 lines, author has presented arguments about petitioning. Now he or she start comparing it with the election process. Okay, so elections are limited in several respects. They involve only a few candidates and thus fall for sort of representative democracy. तो यहाँ बोल रहा है कि इलेक्शन लिमिटेड है, शॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो ऑप्शन 3 इलेक्शन प्रोसेस कर रहा था. अगेन हमको उससे हम कंपेयर करेंगे. राइट, फर्दर वोटर्स चॉइस आर नॉट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पॉलिसीज और लॉज एंड इलेक्शंस आर एपिसोडिक. एपिसोडिक मतलब एक पर्टिकुलर एपिसोड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद. फॉर इन आवर कंट्री इट्स फॉर आफ्टर 5 years. Whereas the voice of the people needs to be heard and integrated constantly into democratic government. फोर्थ को फिर कहाँ फॉल्स कर दिया? इस वाली अकेली लाइन में. तो एक तो यहाँ पे कर दिया और फिर ऑथर बोल रहा है कि वेयर इज द वॉइस ऑफ द पीपल. तो उसने इलेक्शन से कंपेयर किया और फिर एक स्ट्रेंथन कर रहा है वो अपने आर्ग्यूमेंट पेटिशनिंग के बारे में कि क्यों पेटिशनिंग. इसका मतलब जहां से ये लिया गया होगा दैट आर्टिकल इज ऑल अबाउट सिटीजन्स कंट्रोल. पेटिशनिंग या सिटीजन कंट्रोल का डेमोक्रेसी में क्या रूल है, उससे रिलेटेड आर्टिकल से ये पैसेज उठाया गया. Whereas the voice of the people needs to be heard and integrated into democratic. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए तो आपको वॉइस ऑफ द पीपल इंटीग्रेट करना चाहिए. अब ऑप्शन कौन सा सही होगा? फोर्थ तो चला गया. अब थर्ड पे देखते हैं. पेटिशनिंग इज डेफिनेटली मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कलेक्टिव वॉइस. ठीक है. एंड द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इंप्रूव इफ वी रिलाइड मोर ऑन प्रोसीडिंग. ये ऑथर कहीं नहीं कह रहा है कि बी रिलाइड मोर. वो बोला है बाई कंट्रास्ट इलेक्शंस एपिसोडिक इन नेचर है, लेकिन अभी ये नहीं बोल रहा है कि इस पे रिलाई, कि इलेक्शंस पे रिलाई नहीं करना चाहिए. इलेक्शंस नहीं होंगे तो हाउ वी विल चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव? देयर विल बी कंप्लीटली क्योस. राइट, सो थर्ड भी इसका मतलब नहीं हो सकता. अब सेकंड आ जाता है, पेटिशनिंग हैज बीन इंपॉर्टेंट टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एज इट सप्लीमेंट्स द इलेक्टोरल प्रोसेस बाय एनेबलिंग ऑनगोइंग एंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज होल प्रोसेस इज टॉकिंग अबाउट. उसने पहले पेटिशनिंग को किया 5 लाइन में कि पेटिशनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है. सेकंड लाइन में इसको कंपेयर किया इलेक्टोरल प्रोसेस से और कैसे उसको हेल्प कर रहा है. तो इसका मतलब ये एक बेस्ट पॉसिबिलिटी है. बट वी हैव टू सी फर्स्ट वन आल्सो. By giving citizens control over shaping political and democratic agendas, political petitions are invaluable as they represent an ideal form of representative democracy. See, till here one can say, अगर यहीं तक दिया होता तो तब भी आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं ये नहीं बोला गया कि रिप्रेजेंटेटिव
डेमोक्रेसी की आइडियल फॉर्म होगी कि आप सिटीजन्स को ग्रेटर कंट्रोल दोगे, तो वो एक आइडियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी. नाउ इट मीन्स वन कैन नॉट बी आंसर. सो ऑप्शन बी और ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वहां पूछा गया क्या है कि बेस्ट कैप्चर्स the essence of the passage. So essence of the passage is nothing but it talks about the petitioning process and its democratic process. Role of petitioning in democratic functioning. I hope that now you got the point कि कैसे हम आरसी को अप्रोच करें, कैसे आरसी को हम सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे रीडिंग हैबिट्स हमारी. यहाँ देख सकते हैं एक एलिमिनेशन सीधे लग गया बिना पढ़े ही, और यहीं से स्पीड आपकी आएगी. जब एक आपने एलिमिनेट कर लिया बिना पढ़े, इसका मतलब आपका एक ऑप्शन तो कम हो गया ना. अब आपको दोबारा वो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये पढ़ने की जद्दोजहद तो कम हुई, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. जब आपने देखा कि वहां इसके बारे में जो मैं सोच रहा था वो सही था, बस फोर्थ पे हमें जाना ही नहीं है, बस. तो ऐसे आपको सॉल्व करना है. दिस विल बी अवर अप्रोच. वी विल सॉल्व मेनी मोर comprehensions and other things. I will be coming, and not only I, and other we all faculties, right, will be coming up certain new topics on regular basis. So you do join us and enjoy the benefits, reap the benefits of this special initiative. If you like this video, if you like our content, please subscribe us. Please press the like button and press the bell icon also. That's all for today's session. We will be meeting tomorrow. Bye.